Om Shanti. Sister? Om Sister? Shanti. Om Shanti. How are you? Very well, and thank you so much for inviting me. Happy to be with you. You are most welcome. My pronunciation is right or wrong? Ella, is it right? Okay. Yes. Okay, fine. So, this is Sister Savita, and this is translator today. Okay. So, Shanti. we will be Hi, Om translating Shanti. English into Hindi because Hindi is required here. So, she is translator today, and I would like to introduce Dr. Jain Bhai. This is respected Dr. Jain Bhai. Also, I would like to ask you, I would like to inform you, sister, he is in this spiritual knowledge since 1968, and Sakar Brahma Baba permitted him to for their holy marriage. Okay, so Chamba Ben hai, Doctor Sahab? अभी So, बाहर है फोन पर okay. बात कर रही है. So Champaben and brother Dr. Jain Bhai both are Yugal, and they are instrument teacher for us here. Okay. So today you are with Baroda Karelibag family, and one more personality is there with Kishore Bhai, Jaishri Ben and Kishore Bhai. आप unmute करें किशोर भाई. प्यारे भाइयों और बहनों, देखो खुशी की बात है, आज ये जो सत्र होने जा रहा है तो ये विशेष हमारे किशोर भाई और जयश्री बहन का योगदान है, क्योंकि जो सिस्टर एल्ला है वो फिनलैंड से है और आपका लौकिक जो बेटा है वो फिनलैंड में है, तो ये प्रोग्राम में हर रोज हमारे किशोर भाई शामिल होते. सिस्टर एल्ला, डू यू नो अवर जयश्री बहन एंड किशोर भाई? सिस्टर? Soon I will know much better, I'm sure. ओके But ओके we have spoken. Yeah. ओके. Nice तो to see दला और किशोर भाई, आपके बेटे का नाम क्या है? ऋत्विक. ऋत्विक. हाँ, तो आप भी भले वेलकम कीजिए, वो ऋत्विक से वो आपको जान जाएंगे, आप भी भले वेलकम कीजिए. हाँ. ओम शांति दीदी. Om Shanti. Om Shanti. So nice to see you. So they are welcoming you, and they are Laukik mother and father of brother Ritwik. Okay. डॉक्टर साहब आप भी वेलकम करें. ये फिनलैंड से है. ये ऋषि, एक ऋषि दूसरा भी है हमारे मिनेश भाई और हेमानी बेन का बच्चा, वो भी वही लैंड में रहते हैं, उसी नहीं एरिया वो में. अलग है डॉक्टर साहब. नहीं डॉक्टर साहब, ये फिनलैंड है, फाउंडलैंड नहीं, न्यू फाउंडलैंड में नहीं है, ये फिनलैंड से है. ये अलग कंट्री है, वो कनाडा है, ये फिनलैंड अलग देश है. तो शी इज फ्रॉम फिनलैंड, नॉट फ्रॉम न्यू फाउंडलैंड कनाडा. अच्छा अच्छा. हाँ जी हाँ जी. थैंक यू फॉर. अच्छा, बहुत अच्छा. आज आप भी पधारे इला बेन के साथ. हम तो इला बेन कहते हैं. We pronounce इला. इला इज ए मशहूर, ये एकदम जाना हुआ नाम है. Om Shanti Baichi. ओम शांति. एला बेन. हाँ, तो आपको यहाँ पधार कर देखने से बहुत खुशी हो रही है. कितने दूर देश से आप पधारे हैं. आपके बारे में तो अभी जानेंगे, लेकिन अभी भी देखते हुए हो जाता है कि ये तो फरिश्ते आए हैं हम सब बच्चों को सुनाने के लिए. So we feel that you are angel coming here. That is what we know. But otherwise, we will be knowing afterwards, after your experience, that what a nice sister we have got. सविता बहन, आपका जी. पाठ तो शुरू हो गया है. हाँ जी, आई एम रेडी. ओके. आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है. सिस्टर एल्ला, प्लीज यू मे स्टार्ट योर एक्सपीरियंस शेयरिंग. Om Shanti. ओम शांति. Thank you, Savita Ben, for translating. Thanks, Baba. Thank you. सविता बहन, डू यू नो सिस्टर एल्ला टुडे और नॉट?
Yeah, I know her. We did a Ah. retreat together. Why am I asking you, you know or not? You are always knowing. Okay, fine. Spirit of Care retreat in Gansarover. Exactly. We did मैं it together. समझ Yeah. सकता हूँ. ठीक है, अच्छी बात है. Okay. So, my name is Sister Ella from Finland, and it has been like a very, very beautiful journey with Baba. And I was thinking that maybe you would like to hear how I came to Gyan. Would you like to hear? तो मेरा नाम सिस्टर एला है, मैं फिनलैंड से हूँ. मैं जो बाबा के साथ आई वो जो यात्रा है बहुत ब्यूटीफुल है. मैं समझती हूँ कि आप उस यात्रा को जानना चाहेंगे. या दे वांट टू हियर दैट. Yes, and welcome to Helsinki, because this is quite amazing that now when we are in Zoom, it feels that I am in Bharat and you are here in Finland. या मुझे अभी ऐसा फील हो रहा है जूम के माध्यम से आप फिनलैंड आ गए हैं और मैं भारत पहुंच गई हूँ. And maybe you have not even heard the name Finland before because it's very, very tiny country. But Finland is known of 100,000 lakes and lots of forest. फिनलैंड का नाम आपने कम सुना होगा. वहां पर 1000 लेक है. लेक को क्या बोलते हैं हिंदी में? नक्की झील है ना. या तो देयर 1000 वहां पर लेक्स है और बहुत सारे जंगल भी है. तालाब भी तालाब, कहेंगे. बहुत 1000 तालाब है वहां पर. या So temple for Finnish people is nature. They love silence, so always when they want to refresh themselves, when they want to even be in silence, what they do, they go for a walk to nature. तो फिनलैंड के जो लोग हैं उनको शांति बहुत पसंद है. जब भी उनको नेचर वो ज़्यादा पसंद करते हैं, शांति साइलेंस को ज़्यादा पसंद करते हैं. जब भी उनको रिफ्रेश होना होता है वो नेचर में वॉकिंग करने के लिए निकल जाते हैं. And my story begins that I remember in childhood, I really truly believed in God. It was somehow very, very easy and natural for me. And the feeling was that God is good and everyone is good and the whole world is good. इनको बचपन से ही थोड़ा परमात्मा में विश्वास था. इनको ये भी विश्वास था मैं भी अच्छी हूँ, सब अच्छे हैं, दुनिया भी अच्छी है. And then something happened. When I grew older, I always believed in God, but I felt that the relationship became more distant. तो ऐसा कुछ हो गया. इनको परमात्मा पर थोड़ा विश्वास तो था, लेकिन ऐसी एक घटना घटी जिसकी वजह से इनका और परमात्मा के बीच की जो गैप है वो दूर हो गया. And I started to little bit wonder that how can this world be so good and how every human being can be so good, because I saw so many bad things also happening in the world. उनको लगता था कि कुछ कुछ जो लोग हैं वो इतने अच्छे कैसे हैं और कोई कोई है ऐसे बुरे क्यों हैं. इतने सारे जो गलत चीज हो रही है संसार में क्यों हो रही है, क्योंकि इन्होंने ऐसे ऐसे कुछ गलत चीजों को भी बचपन में देखा जो संसार में हो रहे थे. This kind of internal thing. I was living very good life. I was born into a really nice family and I had a good career and I had my own house and everything was like really good. माना जीवन अच्छा था, अच्छा परिवार था, अच्छा जीवन था, अच्छा बचपन इनका गुजर रहा था. इनका खुद का घर था. ओवरऑल एक अच्छा कंफर्टेबल लाइफ जीने के लिए जो कुछ भी सुविधाएं चाहिए था वो सब कुछ था इनके पास. But I was working too much and career was really important for me. And then I started to experience stress in my life. इनको जैसे थोड़े बड़े हो गए, काम वगैरह करना शुरू किया तो क्या हुआ, स्ट्रेस का थोड़ा सा अनुभव करना इन्होंने शुरू किया. And then I started to wonder that what can I do, that how can I really like be in charge of myself again, because I felt that I am not anymore master of myself.
इनको जॉब करते करते खुद पर जो कंट्रोल होता है ना वो जैसे खत्म होता गया। ये हमेशा चाहते थे मैं खुद अपने जीवन का खुद मैं मालिक बनूं, लेकिन जॉब करते समय बाहर की दुनिया में जाते समय कई लोगों के जैसे अंडर रहना पड़ता है, काम करना पड़ता है, तो इनको ऐसे फील हुआ कि शायद मैं अपना जो सेल्फ कंट्रोल है वो खो रही हूँ, उसको गवा रही हूँ। And there was this kind of feeling that, you know, situations happening at work and people, that they are like pressing my buttons and I am just reacting. तो काम पर कई लोगों के बीच में रहना पड़ता है, कई लोग कुछ ना कुछ बातें सुनाते हैं, यू नो, तो वो सब बातों का इन पर थोड़ा सा बुरा असर होने लगा। And whether it was positive reaction or negative reaction, but I felt that I am not the master. तो जब काम पे रहते थे कोई कुछ कहता था, कोई कुछ करता था तो रिएक्ट करते थे, पॉजिटिव था नेगेटिव था इनको इतना मालूम नहीं, लेकिन इनको ये था कि मैं अपना सेल्फ कंट्रोल जो है, अपने ऊपर जो कंट्रोल है उसको मैं गवा रही हूँ। And then I started to find where could I go and learn something, and I found this kind of self-development course. तो इनको लगा कि मैं कहीं जाऊँ, कुछ चीज़ें सीखूं जिसके आधार पर मैं अपना सेल्फ कंट्रोल कर सकूं। इन्होंने कुछ सेल्फ डेवलपमेंट का कोर्स करना शुरू किया। And it was not in a way spiritual and there was no meditation, but I remember the first session we had, they were playing a very beautiful song, which I didn't know that it was a BK song. तो जब सेल्फ डेवलपमेंट कोर्स करने गए तो इतना स्पिरिचुअल वगैरह इतना नहीं था, लेकिन कुछ तो सीखने के हिसाब से वहाँ पर गए, तो एक वहाँ पर बहुत सुंदर सा गीत बजा। फिर बाद में इनको पता चला बाबा का ही गीत था, बीकेस का ही गीत था वो। Sister, which song it was? It was, Do you remember? yes, I remember. 100,000 angels from bliss. Okay. वो गीत था 100,000 जो फरिश्ते होते हैं ना उसके ऊपर कोई गीत था जो इन्होंने सुना था। And what happened during that song to me, I started to cry because I was so happy and I felt like ocean of love was coming inside me. तो वो गीत जब ये सुन रहे थे तो इनको बहुत रोना आया है, रोना शुरू कर दिया। इनको ऐसा लग रहा था स्वयं प्यार का सागर का प्यार मुझे मिल रहा है। And I really didn't know what happened to me because there was no logic in there, but I felt so happy and so light. क्या हो रहा है कुछ समझ में तो नहीं आया, लेकिन बहुत लाइटनेस का अनुभव हुआ, बहुत खुशी का अनुभव हुआ जब उन्होंने वो गीत सुना। And something was awakened inside me. And I remember when I went back home, I just wanted to meditate every day, even though I didn't know what is meditation, but it was such a lovely experience. So I wanted to sit in silence every morning. तो जैसे ही उन्होंने वो अनुभव किया उसके बाद घर चले गए वापस, फिर उनको लग रहा था कि मुझे एवरीडे मेडिटेशन करनी है, क्योंकि इतना अच्छा अनुभव उनको वहाँ पर हुआ था। तो ये सोच रहे थे कि मुझे एवरीडे मेडिटेशन करनी है, लेकिन मेडिटेशन कैसे करना है वो तो इनको मालूम नहीं था। And I was listening this PK song every morning and crying out of happiness, crying out of love. तो गीत सुनते रहे और रोज 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 रोते रहे, प्यार से प्यार की आंसू बहाते रहे। And then maybe after 1 week, it just came from my heart that I really don't want to eat meat. एक हफ्ते के बाद इनको अपने आप लगने लगा मुझे अभी नॉन वेजिटेरियन, मीट मांस जो खाते हैं वो खाना बंद कर देना चाहिए। And I knew nothing about vegetarian because nobody was vegetarian. I was living in a small village or like 20,000 people living there. And everyone said that it is not possible to be vegetarian, that you are going to die if you are vegetarian. तो इनको एक हफ्ते के बाद लगा मुझे कंप्लीट वेजिटेरियन बनना है, शाकाहारी बनना है। ये जहाँ पर रहते थे लगभग वहाँ 20,000 लोग, इतना उस जगह का पॉपुलेशन था। सभी ने बोला कैसे पॉसिबल है, कैसे आप वेजिटेरियन बन सकते हैं, अगर आप वेजिटेरियन बनोगे तो आप मर जाओगे।
And it was like reawakening the memory from the childhood, because I have always known that it's not right to eat meat. इनको बचपन में मालूम था कि मांसाहार जो है ना, नॉन वेजिटेरियन जो फूड है वो नहीं खाना चाहिए। कहाँ ना कहाँ वो था कि वो शायद वापस आया वो संस्कार, इनको लगा कि मुझे अभी नॉन वेजिटेरियन नहीं खानी है। And from that day onwards, I never anymore eat any kind of meat. उस दिन से पूरा वेजिटेरियन बन गया और नॉन वेजिटेरियन कम्प्लीटली बंद हो गया। And I just started to, I say meditate, because I really didn't know what I'm doing, but I was just like so much enjoying to be in silence in the morning. So first it was just one song, but I just started to meditate more and more and more. तो बस उनको था कि मेडिटेशन करना है, कैसे करना है, क्या करना है मालूम नहीं था। गीत सुनते थे और मेडिटेशन करते रहे अपने हिसाब से, अपने हिसाब से। And I tried to ask from the teacher, because it was like a long course. It was like 1 year thing. And I was trying to ask that teacher about meditation, but she really didn't know, because that was not the practice there. तो इन्होंने जो कोर्स किया वो 1 साल का था, जो सेल्फ डेवलपमेंट का कोर्स किया, लेकिन इतना लंबा भी करना नहीं चाहते थे। फिर टीचर्स के पास पूछना चाहते थे कि मेडिटेशन वगैरह क्या होता है। इनको क्लैरिटी चाहिए था क्योंकि वो ढूंढ रहे थे। And it was kind of helpful, that course for me, but I felt that something very, very important is missing. I felt that the whole essence is missing. I didn't know what is the essence. इनको था कि ये तो ठीक है, लेकिन कुछ और है, कुछ एसेंस इसका कुछ और है जो मैं ढूंढ रही हूँ, वो नहीं मिल रहा है। वो भी उनको आभास हो रहा था कि कुछ और जो है वो मैं ढूंढ रही हूँ करके। And then I started to go into other spiritual gatherings, and I was really like trying to find that essence, and I wanted to find that kind of knowledge which is helping me to become a master again. तो ये अलग अलग स्पिरिचुअल गैदरिंग जो आध्यात्मिक ये होते हैं वहां पर जाने लगे, क्योंकि एसेंस ढूंढते रहे, क्योंकि इनको अपने ऊपर कंट्रोल करना था, अपने ऊपर मालिक बनना था। वो मैं कहाँ पर बन सकती हूँ करके सब जगह जाके ढूंढने लगे उसको। And I remember I went so many places, and it was always like good, but I always felt that something is missing. This is not what I'm trying to find, because I didn't know what I'm trying to find. ये कहाँ पर भी गए, घूमते रहे, ढूंढते रहे, कहीं स्थानों पर गए, कहीं स्पिरिचुअल स्थानों पर गए, लेकिन इनको मालूम था कुछ तो मिसिंग है, क्योंकि बाबा नहीं था ना, तो कुछ तो जरूर मिसिंग है करके इनको आभास तो हो रहा था। And then there was the moment that I was thinking, I'm never going to find what I'm trying to find. तो इनको लगने लगा कि शायद ऐसे ही चलेगा, एक्चुअली मैं क्या ढूंढ रही हूँ शायद कभी नहीं मिलेगा करके इनको लगा फिर। And then my friend came, and she said that, you know, I went to Brahmakumaris, and I was participating the retreat there, and you know, it was excellent. Would you like to come with me to the next retreat? तो इनका मेहनत देखता रहा शिव बाबा ऊपर से, और शिव बाबा ने चलो कोई बात नहीं, अभी बच्चे को मैं ले लेता हूँ। तो एक फ्रेंड इनके पास गई और इन्होंने कहा, उस फ्रेंड ने बोला मैं ब्रह्मा कुमारी इसमें गई थी, वहां पर एक रिट्रीट मैंने अटेंड किया, बहुत अच्छा था, आप जाना चाहते हो करके इनकी फ्रेंड ने इनको पूछा। And then I remember when I arrived, I just, my heart knew. I just felt the vibrations, and I was thinking, this is it, now I found it. जैसे ही सेंटर पर गए इनको लगा यही तो मैं ढूंढ रही थी, ये मुझे मिल गया, क्योंकि इनका जो हार्ट है, इनका जो हृदय है, उस लाइक बाबा के जो वाइब्रेशंस है वो उन्होंने कैच कर दिया। But I'm also intellectual person, so I never don't want to just go with the heart. That was what was my heart was saying, and I was saying to myself like, okay, but you need to listen. Let's see what they say. या के बुद्धिजीवी भी थे, जिनको हम इंटेलेक्चुअल्स बोलते हैं ना, बुद्धि से भी वो काम करते हैं,
हृदय ने कह दिया, कुछ भावना में आकर के एक्सेप्ट नहीं कर सकते ना। इन्होंने सोचा थोड़ा दिन देखती हूँ क्या होता है, क्या इनका ज्ञान कहता है। ऐसे करके इन्होंने अपने आप में सोच लिया कि मैं इसको तुरंत एक्सेप्ट नहीं करूंगी, मैं कुछ दिन इसका अभ्यास करके देखूंगी। And it was Prashant Pai from Cambridge. He's originally from Goa. Yeah. He was a teacher in that retreat. And he started to speak about, a soul and attachments and how this is, everything is drama. And I was sitting there and I was like, wow, now I know how to become master of myself again. एक प्रशांत भाई है, वो भी कैम्ब्रिज में रहते हैं। ओरिजिनली वो गोवा से है, भारत से। कैम्ब्रिज में रहकर अभी सेवाएं कर रहे। ही इज अ डॉक्टर ना, डॉक्टर प्रशांत, राइट? तो वो उस रिट्रीट में टीचर थे। बहुत ही योगी आत्मा है, हम भी मिले हैं उनसे। तो उनका उस रिट्रीट में क्लास आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, अनुभवों के बारे में क्लास करा रहे थे। तो इनको बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे अच्छे अनुभव हुए। And I just loved Gyan. And I was just sitting there and I just wanted to hear everything. And I was writing, notes, and it was such a beautiful Baba's, atmosphere and vibrations. And I was just enjoying myself. Where this was, which place? This was where? This was in Finland. फिनलैंड ओनली। ओके, तो ये फिनलैंड की बातें, इसका मतलब इनको फिनलैंड में ही ज्ञान मिला है। तो इनको बाबा का ज्ञान अच्छा लगा, जो उन्होंने रिट्रीट में सुना, अनुभव अच्छा लगा। इतना माना दैट्स इट बोलते ना, यही जो है मैं ढूंढ रही थी, वो जो मुझे भी मिल गया है। And I remember there was this kind of evening program, this kind of dancing and singing. And I was asking that, is it possible to skip the program, that I want all of this knowledge? I'm so hungry. I have been searching this knowledge for such a long time that I cannot wait any longer. Please give me all you have. माना ये ज्ञान के लिए इतने भूखे प्यासे थे, ये बोल रहे थे कि और कुछ नहीं, कल्चरल प्रोग्राम, सिंगिंग, डांसिंग का कुछ रखा होता है। उन्होंने बोला मुझे वो कुछ नहीं चाहिए, ज्ञान दो, ज्ञान दो, अब जितना दे सकते हो ना वो मुझे ज्ञान दो, ज्ञान दो। मैं ज्ञान के लिए भूखी हूँ, प्यासी हूँ। But they said to me that please come, that this is something fun and nice. And I tried my best. I was sitting there maybe 15 minutes, but then I wanted to go back to my room and take my notebook and go through the knowledge again. तो इनको जो फन था, वो डांसिंग, सिंगिंग इतना अच्छा नहीं लगता था, इनको ज्ञान लेना था ना। तो ये फिर अपने कमरे में गए, डायरी ले लिया, पेन लिया, उसमें लिखा हुआ था ना, वो सारा वापस पढ़ने लगे, रिवाइज करने लगे। And then I remember there was one brother who came with me in my car back to the home city. And he was the brother who has visited in Madhuban as a Brahmin. And he told about Madhuban. And I said, I want to go to Madhuban. When can I go? ये भाई से मिले, एक भाई से वो मधुबन होके गया था, और मधुबन का सारा अनुभव वो भाई ने इनको सुना। इनको लगा अच्छा, अभी मुझे मधुबन जाना है। And brother said, Ella, it's not so easy. You cannot just go. You have to, there is a lifestyle you need to follow, and you have to study this every morning and wake up early in the morning. And I said, I'm already waking up every morning very early. And yes, is it possible to study this every day? I am ready. And tell me what is the lifestyle. And he told me the lifestyle, and I realized I am living already the lifestyle, except onions. Sorry, what was it? What was that last part? Onion. I was Only eating audio. onion, garlic. All sorry. Onion, like eating onion and garlic. हाँ, okay, yeah. Only thing that was not the Brahmin lifestyle. तो वो भाई ने इनको बोला कि ऐसा आप आसानी से मधुबन नहीं जा सकते हो, इसके लिए एक लाइफस्टाइल है। एवरीडे मुरली सुननी पड़ेगी, अमृत वेला उठनी पड़ेगी, प्याज लहसुन छोड़ना पड़ेगा, सारी धारणाएं हैं, ये करेंगे तो ही आप मधुबन जा सकेंगे, ऐसे वो भाई ने इनको बताया।
And then I started to prepare myself, and I was very, very lucky to go to London, to Global House. After just I was maybe 2 months in Gyan. And it was because I had every morning there was a voice inside my head saying that you have to go to Brahmakumari's London. You have to visit there. You have to visit there. And it was such a voice that, and I was thinking that, what can I do? I have been participating just once. That how can I immediately go and say that I want to come to London now? See, when that brother told you you have to follow this lifestyle, you have to leave onion and garlic, so you started doing that also instantly? I already did that, but then I started to study because I was living the lifestyle already. ओके तो ये जैसे वो भाई ने बताया ना कि आपको ऑनियन गार्लिक वगैरह छोड़ना पड़ेगा, इन्होंने ऑलरेडी वो लाइफस्टाइल को भी अपना लिया था। तो इनको कोई आकर के जैसे कान में बोल रहे थे कि आपको ब्रह्म कुमारीज लंदन में जाना चाहिए, ब्रह्म कुमारीज लंदन में जाना चाहिए, इतना ही कंफ्यूज हो जाए कि अभी मैं कैसे, अभी तो 2 माह से मुझे हुए हैं यहाँ पर आते हुए, मैं कैसे बोल दूं कि मुझे ब्रह्म कुमारीज लंदन में जाना है। And I moved to London. You went to London? I wanted to move, just like leave Finland and move to London. But then I was thinking, this is not very clever, that I am a clever, human being, and how can I feel like this? But it was such a strong feeling, such a strong pull to go there. फिर इनको लगने लगा था मैं फिनलैंड छोड़ दूं, लंदन चले जाऊं परमानेंटली, लेकिन फिर इन्होंने सोचा ये कैसा है, अभी तो मैं चल रही हूँ यहाँ पर इस मार्ग में, ऐसा नहीं अचानक हम डिसीजन सडनली लेना नहीं चाहिए करके थोड़ा सा फिर आराम से बैठकर सोचने लगे। And then I went there and I didn't speak English well. At that time I needed translation. So I didn't understand the Murlis or anything, but I was so determined to go that I said, I am going to understand. I am going to learn. This will work out. Who did translation for you there? Nobody. I was reading the Murlis beforehand with the dictionary. With what? With a dictionary. Dictionary, okay. तो ये इन्होंने जैसे तैसे ब्रह्मा कुमारीज लंदन में पहुंच गए और वहां पर इनको इंग्लिश भी इतनी नहीं आती थी, इनको कोई ट्रांसलेशन करने वाले चाहिए थे, मुरली भी पढ़ते थे, फिर डिक्शनरी का मदद लेकर के मुरली भी थोड़ा थोड़ा समझते थे, माना ये गए फिर लंदन बाबा के पास पहुंचे वहां सेंटर पर। And when I was sitting in Baba's room and I was sitting there and just seeing Baba's eyes, and such a loving, powerful Kristi came. And I was like, oh, this is my father. This is my Baba. That was in Global House, right? Global House, okay. तो Global House में जो बाबा का कमरा है, जो वहाँ पर ये बैठे बाबा के कमरे में और बाबा से दृष्टि लेने लगे, तो इतने अच्छे अनुभव होने लगा और लगा ये तो मेरा पिता है, तो मेरा बाबा है। And after that, I just wanted to move to the center. I didn't want to live normal life anymore. तो बस दैट्स इट। उसके बाद इनको लगने लगा अभी तो मुझे सेंटर पर रहना चाहिए और मैं अभी सेंटर पर ही रहना चाहती हूँ, नॉर्मल लाइफ अभी मुझे नहीं चाहिए। दिस वाज इन व्हिच ईयर सिस्टर? This was 2008. 2008, अच्छा 2008 की बात है। And then I remember I was asking that is there any possibility that I could stay here, that I really much would like to stay here in London and do whatever is needed. But then they said that, hey Ella, you are much more needed in Finland, that there is not so many Brahmins. It's good that you go back and you can visit as many times as you like. तो ये जब ब्रह्म कुमारी माना बाबा का जो घर है लंदन में, वहां पर जब गए देखा तो इनको लगा कि मैं यहीं पर रह जाऊं क्योंकि इतना अच्छा वहां बाबा का घर है। तो लेकिन फिर इन्होंने अपने आप से बात किया
यहाँ तो अच्छा है, रहना चाहिए, लेकिन यहाँ से ज्यादा जरूरत मेरा वहाँ फिनलैंड में है, क्योंकि वहाँ इतने बाबा के बच्चे नहीं, इतनी सेवा वहाँ पर नहीं हुई है करके इन्होंने फिर सोचा उसके बारे में। And then it was after it was February, and then I came to Bharat for the first time. And came where? Coming to Bharat. Bharat, okay, yeah. And I remember when I was sitting on the airplane, and I was just by myself alone coming there, and I remember I just felt the vibrations of Bharat, and I started to cry out of love again. तो ये पहली बार फरवरी मास में भारत आए. सो यू केम फॉर बाबाज मीटिंग और जस्ट ओके. फरवरी मास में भारत आए, मधुबन आए बाबा से मिलने के लिए. जब एरोप्लेन में बैठे तो इतना इनको खुशी, देखिए भारत की वैल्यू इनको कितनी है, हमको इतना नहीं क्योंकि हम यहीं रहते हैं. बाहर जो रहते हैं उनको कितनी वैल्यू है भारत की. तो रोने लगे. वो बाबा का प्यार, भारत भूमि का प्यार इनको जैसे अनुभव होने लगा जब एरोप्लेन में बैठे थे. तो And I remember how everything felt so comfortable and so easy, and I was like madly in love with Baba. So it was like a beautiful honeymoon time. तो ये जैसे ये आए मधुबन, जैसे पागल हो जाते हैं ना बाबा के बारे में. खास करके फर्स्ट टाइम जब हम मधुबन आते तो इतना बाबा का प्यार, परिवार का प्यार, दादियों का प्यार, ऐसे अनुभव हुआ ये बाबा के साथ. मेरा हनीमून है. Then I came back to Finland and starting Gita Patshala, the courses, giving courses and everything, because I just loved this knowledge. So I wanted to share it from the first day when I came to the first time to the retreat. तो ये वापस फिनलैंड आए. सो यू स्टार्टेड गीता पाठशाला एट होम. या सो योर पेरेंट्स वर ओके विद दिस. I was living by myself. सही हो. तो ये आप अकेले रहते थे, तो इनको था कि अभी मैं फिनलैंड में वापस आए मधुबन से तो गीता पाठशाला शुरू करूं, कोर्सेज क्लासेस देना शुरू किए. इनको था कि बाबा का मैसेज जितना हो सकता है सभी तक पहुंचना चाहिए. And then I moved to the main center, which is now here, where I am now in Helsinki. तो अभी उसके बाद सॉरी आफ्टर 2 years, तो 2 साल तक गीता पाठशाला चलाते रहे. उसके बाद अभी जहाँ पर बैठे हैं ये फिनलैंड का मेन सेंटर है, वहाँ पर ये शिफ्ट हो गए. So this is how I am here today, and it was like a lovely beginning, and I would like to share with you that what has been like very important aspects in Baba's teachings for me. तो देखिए आपके सामने अभी मैं बैठी हूँ और ये थी मेरी जर्नी. और अभी मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहूँगी कि बाबा के जो हमारे प्रति आशाएं हैं, बाबा की जो मेन शिक्षाएं हैं वो कौन सी है, उसके बारे में थोड़ा मैं शेयर करूँगी. And I have really always wanted to go to the essence. I have always wanted to experience powerfully and not just, knowing the theory. इनको हमेशा ये संकल्प था कि मैं एसेंस में चले जाऊं. एसेंस जो है ना, जो मक्खन है, जो एसेंस है वो मैं अनुभव करूं, बहुत विस्तार में नहीं जाऊं. एसेंस बाबा कौन है, कैसा है, क्या है, उसको मैं अच्छे से समझूं. ये हमेशा उनका संकल्प था. And as Baba has said in one of the murlis, that the yogi is the one who is living there and just visiting here, and the one who is practicing yoga is living here and visiting there. बहुत अच्छी बात इन्होंने सुनाई. बाबा ने एक मुरली में कहा है, योगी माना कौन है, जो ऊपर रहता है, माना उसकी स्थिति ऊपर रहती है, वो केवल अपने कर्म करने के लिए यहाँ पर आता है, अपना कर्म करके वापस वहां चला जाता है. वो योगी की सच्ची स्थिति है. So
that has always been an interest to really be a yogi. And what has been like helping in that journey? तो हमेशा एक योगी माना, योगी का डेफिनेशन यही है, वो हमेशा वो योगी बनना चाहते थे, हमेशा इनका पुरुषार्थ था कि मैं अच्छे से अच्छा योगी बन जाऊं. It's like, I love this Gyan, but Gyan needs to be experienced. Otherwise, it's dry. It's just theory. It's just information. या ज्ञान मुझे बहुत पसंद है, लेकिन ज्ञान को अनुभव करना बहुत ज़रूरी है. अगर हमने ज्ञान को अनुभव नहीं किया, वो केवल इन्फॉर्मेशन हो जाता है, एक थियरी हो जाता है. प्रैक्टिकल में अगर हमने उसको अनुभव नहीं किया तो ड्राई हो जाता है, सूखा सूखा लगने लगता है. And who is able to experience it? The yogi, the soul. और जो योगी है वही ज्ञान को अच्छे से, आत्मा जो योगी आत्मा है वही उस ज्ञान को अच्छे से अनुभव कर पाती है. So what has been very helpful for me when Baba is speaking with such a clarity how this is drama. For example, today he said that this is predestined, fixed drama, and all the roles are fixed, everything is fixed. या जैसे आज भी बाबा ने मुरली में कहा, ड्रामा प्रीडेस्टिन्ड है, फिक्स्ड है, हर एक का रोल भी फिक्स है. तो बाबा जो ड्रामा के बारे में ज्ञान देता है वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है. And it is such a relieving knowledge because it really helps the soul to become free from the drama. तो बाबा का जो ज्ञान है इतना रिलीफ हमको दे देता है, सभी क्वेश्चंस का उत्तर हमको दे देता है. उससे क्या होता है, हम जो कई बंधनों में फंसते हैं ना, उससे हम फ्री हो जाते हैं. Because otherwise a soul is so trapped with this role, and the name of this role is Ella. नहीं तो हम रोल कॉन्शियस, इतना रोल कॉन्शियस हो जाते हैं, हम क्या कर्म कर रहे हैं उसमें इतना हम अटैच हो जाते हैं. मेरा नाम, मेरा फेम, मेरा पोस्ट, मेरा पोजीशन, जो हम काम करते हैं, कर्म करते हैं, उसका हम बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं, रोल कॉन्शियस हम हो जाते हैं, भूल जाते हैं कि मैं कौन हूँ. And of course it is possible to practice yoga from that consciousness also, that I am Ella, I am this body, and yes, it is possible to experience peace and relaxation and everything. ये तो पॉसिबल है. मैं इला हूँ, उससे मैं डिटैच होकर के मैं ओरिजिनली मैं क्या हूँ, वो खुशी, वो रिलैक्सेशन का अनुभव हम कर सकते हैं बाबा का जो ज्ञान है उसकी मदद से. But it's not real. It's not the real soul conscious peace. शांति भी ऐसे वैसे हम शांति का अनुभव करते हैं, वो कहना इजी है, लेकिन सोल कॉन्शियस में रहकर, आत्म अभिमानी स्थिति में रहकर जो शांति का अनुभव करना है वो रियल शांति है. And of course, all of us, we have to start somewhere. And but this was like from the beginning something I really wanted to refine and separate in my consciousness, that I'm very clear that who am I, the soul, and what is a role. सोल और रोल दोनों अलग अलग शब्द है, तो हम भूल जाते हैं कि मैं सोल हूँ और बहुत रोल में हम फंस जाते हैं. तो शुरू से इनका ये प्रैक्टिस था कि मैं अच्छे से इसको अनुभव करूँ और दोनों अलग अलग है, उसको भी मैं अच्छे से जानूँ कि मैं आत्मा हूँ और मेरा रोल अलग है, दोनों कंबाइंड नहीं है. उसकी गहराई में हमेशा जाना चाहते थे. Because it is the soul who is in bliss, and it is the soul who is experiencing fullness, experiencing spiritual powers, and it is already there. That is what we originally, all of us, what we are. ये आत्मा है ना, वही आनंद का अनुभव करता है, ये आत्मा ही शक्ति का अनुभव करता है, वो हम ओरिजिनली है एक्चुअली. लेकिन हम कर्म में आते 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 भूल जाते हैं कि हम ओरिजिनली कौन हैं और कर्म में हम फंस जाते हैं. And I realized that this is the first step I need to refine in order to grasp properly Baba and really experience the
personality of Baba, experiencing the pure vibrations of that purest, highest being. तो ये हमेशा चाहते थे कि बाबा जो प्योरेस्ट है, हाईएस्ट है, श्रेष्ठाति श्रेष्ठ है, उस शक्ति को, उस प्यार को, गुणों को मैं अच्छे से अनुभव करूं। वो तभी पॉसिबल हो सकता है जब हम अपने ओरिजिनल स्टेट में स्थित रहेंगे। थोड़ा भी नीचे आएंगे, कर्मा में जाकर के फंस जाएंगे तो बाबा जो देने आए हम ले नहीं सकते हैं। तो ये हमेशा चाहते थे कि मैं उन सभी चीज़ों को अच्छे से अनुभव करूं। And really getting rid of the I and my consciousness. That has been like practice from the day one. तो शुरू से इनका प्रैक्टिस था कि मैं और मेरा, जिसमें हम इतने फंसे हुए हैं, उससे मैं डिटैच हो जाऊं, उससे मैं अलग हूं, उसका मैं अभ्यास कर सकूं। इन्होंने इस बात पर शुरू से अटेंशन रखा है। Because this I and my consciousness, it's really like blocking the experience of being a soul. मैं और मेरा में जितना जितना हम फंसते जाते हैं, मैं आत्मा हूँ, जो हमारा ओरिजिनल स्वरूप है, उसको हम भूल जाते हैं। I based on something which is temporary, this body, it has a beginning and it has an end. And if I really truly believe that I am this body, I am this role, I can never experience real peace. सच्ची शांति का अनुभव जब तक हम समझते हैं ना, शरीर में हूँ या जो हम काम करते हैं वो मैं हूँ, थोड़ा सा भी उसके साथ अगर मेरा अटैचमेंट है, तो बाबा जो रियल शांति का अनुभव देना चाहता है हम कभी नहीं कर सकेंगे। So it is like false identity. And the realization came that this is why I have not been able to be master of myself, because I always thought that I have so much courage and I am able to do many different things and getting many achievements in my life. But I was thinking why I am not able to be master of my mind. क्योंकि हम अपने ही गलत आइडेंटिटी के साथ अटैच हो गए हैं और हम उस आइडेंटिटी के आधार पर हम समझते हैं मेरे में धीरज है, मैं कर सकती हूँ, मैं ये हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ों को कर सकती हूँ। इतना कुछ करने के बाद भी क्या हमारा स्व के ऊपर कंट्रोल है? ये क्वेश्चन जब हम पूछेंगे अपने आप से तो आंसर नहीं मिलता है, क्योंकि हम अपना जो गलत आइडेंटिटी है ना उसके साथ अटैच हो गए हैं। So, and realization has been that those false identities, those false I's and my's. या तो जो गलत मैं का भी बहुत बड़ा विस्तार है, मेरा का भी बहुत सारा विस्तार है, तो उसमें जब हम फंस जाते हैं तो फिर गए काम से। You see one and then the second one popping out somehow. But the practice has been that rather focusing on quality than quantity. तो जो मैं का या मेरा का जब उसकी सिलसिला शुरू होती है ना, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, उसका कोई अंत नहीं जितना हम उसके पीछे जाते हैं। तो इसीलिए इनका हमेशा अटेंशन था कि ओरिजिनल हम कौन है, क्या है, उसका हम अच्छे से अनुभव करें। Because this is like intellect yoga. It's really like question of using gyan in order to be in yoga. So really like refining gyan in such a clear way that soul is able to experience the reality. माना ज्ञान के आधार पर, उस क्लैरिटी के आधार पर जब हम समझते हैं, योग करते हैं, तो तब इजी होता है। नहीं तो हम इसी बातों में जितना फंसेंगे उतना फिर हम बाबा को याद नहीं कर सकेंगे। And then I realized in the early days in this gyan that this I and my, that was why I felt that my buttons are pressed. Because I was really like reacting. I felt like I am a puppet and I'm not able to decide when I am happy and I want to be peaceful. But it was situation which made a decision for me. Yeah. Something not so nice and I became sad.
तो इनको हमेशा था कि जब मैं और मेरा में जब बहुत फंसते हैं तो दूसरों के कंट्रोल में हम होते हैं, हम पॉपेट बन जाते हैं, हम एक गुड़िया बन जाते हैं, एक डॉल बन जाते हैं। दूसरे अगर कुछ बोलेंगे हम अच्छा फील करेंगे, दूसरा कुछ बोलेंगे हम लो फील करेंगे। मतलब बटन अपना जो कंट्रोल है हमने उसको दूसरों के हाथ में दिया हुआ है। ये तो सेल्फ कंट्रोल नहीं हुआ ना, ऐसे इनको अनुभव होता था। So whenever there is this I of an ego, this false identity, there is always feeling of emptiness inside. There is feeling that I need something, I lack something. Where can I get peace? And now we go to the nature to experience peace, to get peace. या तो जब हम आई और मैं और मेरा में फंस जाते हैं, हम बाहर चीज़ों को ढूंढते रहेंगे। मुझे शांति कहाँ से मिलेगी, मुझे खुशी कहाँ से मिलेगी, मुझे मान शान कहाँ से मिलेगा, मुझे कहीं जाना है, मुझे प्रकृति में जाना है, शांति का अनुभव करना है। इसे बाहर ही बाहर चीज़ों को हम ढूंढते रहेंगे, क्योंकि मैं और मेरा का जो ओरिजिनल डेफिनेशन है उसके गहराई में हम गए ही नहीं। Om Shanti. It means Atma. Shanti. So Shanti is inside. Shanti is not in the forest. जंगल में नहीं है शांति, शांति तो अंदर ही है। सिस्टर, आर यू द एनसी फॉर फिनलैंड? No, Sister NC. Geeta. NC. सिस्टर गीता? ओके ओके ओके। सो सिस्टर गीता है वहाँ पर, एनसी है, नेशनल कोऑर्डिनेटर है, आप उनके साथ रहकर सेवा। इज शी फ्रॉम इंडिया? No, Finnish. Sister. बट शी हैज गीता नेम, नो? इंटरेस्टिंग। Yeah, yeah. या He loves the name. तो इनके ऊपर जो नेशनल कोऑर्डिनेटर है उनका नाम गीता है। मैंने वही पूछा वो इंडिया से है क्या, नहीं बोलते वो वहीं की है, लोकल है, लेकिन उनको गीता नाम बहुत पसंद है, बिकॉज बाबा भगवत गीता, राइट? बाबा's knowledge is all. सविता बेन उनका भी सेशन फाइनल हुआ है। Okay, okay, very good. She is also going to take class. Geeta Ben is also going to वो give class. सिस्टर एल्ला ने ही फिक्स किया है, उन्होंने ही करवाया है। Okay, very good, very good. So Yeah. you are going to meet her. Sorry? You are going to meet her. Yeah, yeah. तो आप हम सभी मिलेंगे गीता बहन से। Yeah. So about this I and my, because that was really like, I felt that how that is the trap, which was really like trapping the soul, and soul was not able to breathe. आई एंड माई, मैं और मेरा का जो ट्रैप है जिसमें हम फंस जाते हैं, अगर हम फंस गए तो सांस नहीं ले पाएंगे। इसका मतलब माया ने इतना अटैक किया हुआ है, हम बेहोश, बाबा बोलते हैं ना, बेहोश कर देती है माया। तो आई एंड माई, मैं और मेरा में जितना हम फंसते हैं उतना हम बेहोश हो जाते हैं, सांस नहीं ले पाते हैं। I become happy when my friend is nice to me. या आई थिंक दिस क्लास इज फॉर मी। सो मुझे तब खुशी मिलती है जब मेरा कोई फ्रेंड मेरे से अच्छे से बात करती है। ऐसे हम फील करते हैं ना, कभी कभी कोई मेरे से अच्छे से बात करे इसीलिए मुझे अच्छा लगा। Yeah, and when the friend was nice, then Ella was very happy. When the friend was not fulfilling all the expectations were in the mind, my friend should be like this, like that, like that. तो देखिए हमारी जो खुशी है, हम कैसे दूसरों के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। मेरी फ्रेंड ऐसी है, ऐसी है, ऐसी है, ऐसी है, मेरे से अच्छे से बात किया, व्यवहार किया तो मुझे अच्छा लगा। अगर उसके व्यवहार में थोड़ा से भी ऊपर नीचे हो गया तो मेरी खुशी भी डाउन हो गई। And what I noticed, that more there is these expectations and desires to get something from the friend, and more friend was giving me happiness and compliments and regard and acceptance, the bigger my expectations came, because I was expecting that she will give that tomorrow also, and she will give even more. That might be a Brahmin friend also, no? Especially Yes.
तो क्या होता है जब हम अपने फ्रेंड्स के साथ एक्सपेक्ट करने लगते हैं ना, वो बहुत देती भी है, भले इस जीवन में हो, सखियां भी हमको होती है, यहाँ पर भी हम अपने फ्रेंड्स बना लेते हैं, वो प्यार देगी, रेस्पेक्ट देगी, पूछेगी हमको कैसे हैं क्या है। तो जितना जितना वो एज ए ह्यूमन बीइंग वो देती जाएगी, देहधारी से ले रहे हैं ना, तो देहदारी से ले रहे हैं, ले रहे हैं, वो भी देती जा रही है, देती जा रही है। वो जिस उससे हम जितना ले रहे हैं उतना हमारे एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। या And then those days when the expectations were met, feeling so sad. How can she be like that? How can she treat me like I am? behave like that, how can she behave like that? Yeah. तो ऑल ऑफ सडन जो देहदारी से ले रहे थे, वो भी दे रहे थे, हम भी ले रहे थे, बहुत मजा आ रहा था। ऑल ऑफ सडन क्या हो गया, उसने देना बंद कर दिया, उसने पूछना बंद कर दिया। हमारी जो स्थिति है वो डाउन हो जाती है, हम लो फील करना शुरू कर देते हैं। So this is the I and my trap. First identification, I am this body, and the body has name Ella, so I am Ella, and she is my friend. I and my. ये सबसे बड़ी जाल है, मैं और मेरा। मैं एला हूँ, मैंने अपने को ऐसे पहचान लिया, मैं भूल गई कि मैं आत्मा हूँ, और वो मेरी फ्रेंड है, माय फ्रेंड। मैं और मेरा, ये बहुत बड़ा जो जाल है उसमें हम फंस गए। And then these relationships, they are not anymore relationships, but those are like bondages. या वो संबंध अभी संबंध नहीं रहे, वो हमारे लिए बंधन या इवन अटैचमेंट वी कैन कॉल इट, नो, वो बंधन बन जाते क्योंकि हम बहुत अटैचमेंट में चले जाते हैं। And every soul deserves to be free. And when there is this kind of bondage, we never feel comfortable. तो ऐसे बंधन में हम खुद फंस जाते हैं, देहधारियों के कनेक्शन में आकर के, तो फिर जो अच्छा हमको फील करना चाहिए हम कभी फील नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर एक आत्मा फ्री है, हर एक आत्मा इंडिपेंडेंट है। And then when starting to really like realize deeper and deeper and deeper that not my friend, this is not me, is not my friend, but I am a soul, and that one is also a soul. या And the soul is full, happy, perfect, full, and so is that soul. या तो जैसे जैसे हम ज्ञान की गहराई में जाते हैं, ये अनुभव होता है वो मेरी फ्रेंड नहीं है, मैं भी आत्मा हूँ, वो भी आत्मा है, मैं भी परफेक्ट हूँ, फुल हूँ, खुश हूँ, तो वो आत्मा भी परफेक्ट है, फुल है, खुश है। मैं भी आत्मा हूँ, वो भी आत्मा है, वो मेरी फ्रेंड नहीं है। And then it's like coming from completely from different perspective to that relationship, because then there is not anymore this kind of energy of taking. It's like using another one. It's like, I am lacking love, now you need to give me some acceptance. It's like coming from the mindset of begging. या तो वही जब मैं और मेरा में हम फंस जाते हैं, मुझे प्यार चाहिए, मुझे मान चाहिए, मुझे सम्मान चाहिए, हम देहधारियों से एक्सपेक्ट करने लगते हैं, फ्रेंड से एक्सपेक्ट करने लगते हैं, जब हम अपना जो ओरिजिनल स्वरूप है वो भूल जाते हैं। And how beautiful it is to experience that more and more one is able to let go of this web of I and my. It's like soul is able to experience more that real peace, real happiness, and there is like no reason for that. It's just being happy because soul is happy, soul is light, soul is peaceful, and no matter what is happening in the drama, Om Shanti, it's fine. तो आत्मा की जो ओरिजिनल खुशी है, ओरिजिनल शांति है, वो आत्मा में है ही ऑलरेडी। किसी से हम ले वो फिर टेम्पररी हो जाते हैं, कांस्टेंट नहीं रह सकते। ड्रामा में कुछ भी हो रहा है, कुछ भी चल रहा है, कोई क्या भी कर रहा है, क्या भी कह रहा है, लेकिन उसका असर मेरे ऊपर नहीं होगा, क्योंकि मैं ओरिजिनल खुशी, ओरिजिनल शांति की स्थिति में हूँ। कुछ भी हो गया, कोई बात नहीं, ओम शांति। The master, something what I wanted to become, I realized that soul
is a master and soul needs to be awakened. या तो इनको हमेशा संकल्प था ना, शुरू से ज्ञान में आने के पहले से ही इनको संकल्प था कि मुझे मास्टर बनना है। तो आत्मा जब इंडिपेंडेंट बनती है, आत्मा जब बाबा को पहचानती है, वो मालिक बन ही जाती है। तो इन्होंने फिर उसको अनुभव किया अच्छे से कि मालिक कैसे बनना है। And that's why from the day one, I have just loved this Gyan, because I was meditating before also, but the accuracy was missing. The understanding of the soul, God, drama, and others as souls was missing. तो ये तो ज्ञान में आने से पहले ही वैसे मेडिटेशन वगैरह करते थे, लेकिन ज्ञान में आने के बाद आत्मा, परमात्मा, ड्रामा, सारी चीज़ों का इनको अच्छे से ज्ञान मिला। डे 1 से ज्ञान इनको अच्छा लगा, इसकी गहराई में जाते रहे। I am still in my journey, and I will do until the last breath I take in this body. But this is very, very enjoyable journey. तो अभी भी मैं यात्री हूँ, यात्रा कर रही हूँ इस मार्ग में, इस जीवन में, और जब तक मेरी आखिर सांस चलेगी तब तक इस यात्रा में तत्पर रहूंगी। और ये बहुत एंजॉयबल जीवन है, ये हम अच्छे से आज हम सभी समझ ले, सीख ले, क्योंकि कभी कभी ब्राह्मण जीवन में भी तंग हो जाते हैं ना लेकिन इन्होंने कहा ये बहुत ही एंजॉयबल, मोस्ट एंजॉयबल, बहुत खुशी का ये हमको जीवन मिला है, उसको हम अच्छे से अनुभव करें। Om Shanti. ओम शांति। Ella. एला, आप सबकी प्यारी बहन एला। Om Shanti. Wonderful sharing, sister. Wonderful sharing. Thank you for sharing your experience and your thoughts. Okay. It's really important to be focused on the very first day of the 7 days course, and that is I and my. It's really important, and you have kept in your mind about this importance. So देखो भाई और बहनों, इन्होंने कितना गहराई से इस बात पर ध्यान खिंचवाया कि मैं और मेरा, मैं ये हूँ, ये मेरा दोस्त है, ये तो खुशी किससे लेनी है, तो ये नहीं हमारा रिमोट कंट्रोल किसी और के पास चला जाए। सो वंडरफुल शेयरिंग। और सिस्टर, you are thousands of kilometers far from here, but we can feel your peace, we can feel your happiness here. Wonderful. It's really. Om Shanti. Ella Ben, you were from the very beginning beloved of love. You were beloved of love. So when you got the vibrations of the love and happiness, you were out of I and my. And that is why at present also you are a wonderful child of Baba and lovely child of Baba who makes us to feel loveful, cheerful at present. Or thank you very much for such a nice experience that you have shown to us, and we are very thankful to you and all others who are there. Acha, Om Shanti. Now, brother Rutik. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। At present, where are you, Rutik bhai? So I'm from Maharashtra, Nasik, but currently I'm staying in Tampere, Finland. So I have moved here for my job purpose, and currently I'm staying here from last 8 months. Okay, brother, say something about Sister Ella, your experiences with Sister Ella. So when I moved here, actually, whenever I go anywhere outside of my hometown, I generally see for where the nearest Seva center is. So I got to know about Sister Ella after coming here.
unfortunately, after coming here, I couldn't meet her because current pandemic situation, and because of that, there were no live any gatherings. So, but I had a call, and we are being in touch. So I can see that there are many events that are organized by Sister Illa, which is very helpful. And the Finland is really scenic, beautiful, and I feel that it's more peaceful. Sometimes I feel being in Madhuban when I be here. So the nature and this country I love a lot. So it feels you get more connected for meditation. In meditation, you get more connected with the Shiv Baba. So yeah, so my experience with Sister Illa and this place is really amazing. Thank you. Shanti. Sister Thank Ella, this is Champa Ben, respected Champa Ben. She is in charge of Kareli Bagh Center, Brahma Kumaris Kareli Bagh. Okay. आपका नाम एला बेन है, यहाँ पर इला बेन और बेला बेन। कि आपने बाबा से कितना न खुशी का खजाना और शांति का खजाना लिया है, आपके चेहरे से ही पता पड़ता है। Okay, Sister और Ella. सविता बहन, Sister सविता Ella. बहन तो जैसे हमारे ही हो गए हैं, नहीं है ना? Sister Ella, Champa Ben is asking you that your name is Ella and we have Ila, not Ella. So in India, the name is Ila. Okay, so you are Ella and we have some sisters whose name are Ila, right? And your face is demonstrating that you have got too much treasure from Shiv Baba. Champa Ben is asking like that. Okay. Okay. बोलो मैं दो शब्द बोलेंगे। हाँ बोले। Sister, your face is very beautiful, cheerful, and you are so lucky and lovely, and I feel that you are radiating vibrations or peace and happiness toward to the world, not only your place but to the world. Om Shanti. Om Shanti. I Okay. feel blessed. I get all the vibrations from all of you, and that's why it is so uplifting experience. So thank you so much. Okay. So Sister Ella. निमंत्रण दो, निमंत्रण। हाँ वही कह रहा हूँ. So Champa Ben is asking, whenever you are going to visit Madhuban, you have to visit Vadodara also. Okay, you are most welcome to visit Vadodara. Vadodara family will give you very warm welcome, and it's a city of Sir Sayaji Rao Gaikwad, King Sir Sayaji Rao Gaikwad. So it's really a nice city and just 300 kilometers far from Madhuban. So whenever you are going to visit Madhuban, you have my contact number. You may inform me. Okay, we will arrange for your transportation, everything. So you are most welcome. So this is our invitation, our heartily invitation to you from Dr. Jain Bhai and Champa Ben. We will be sending you the Shankal Kambaruda. Okay. Okay, ऋत्विक भाई कुछ कहना है? ऋत्विक भाई जी अच्छा हाँ बोलिए। बाकी तो कुछ नहीं, बस यही है कि अभी यहाँ आने के बाद हम लोग यहाँ पे अभी ज्यादा से ज्यादा सेवा करने की कोशिश जरूर करेंगे। बहुत अच्छा। और जी तो लुकिंग फॉरवर्ड की इला बहन के साथ मिलके, और हम यहाँ पे जो गीता दीदी है उनके साथ मिलके इस सिटी में हम जितना यहाँ बाबा की सेवा कर सकते हैं उतना हम करेंगे। बहुत अच्छा, मुबारक हो, बहुत बहुत बधाई हो आपके इस संकल्प। तो खास तो आज किशोर भाई और जयश्री बहन का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें मिलाया, ड्रामा में आप निमित्त बने हैं। तो ऋत्विक भाई और किशोर भाई, जयश्री बहन, सारे परिवार को लाखों बधाइयाँ है।
और आप आगे भी ऐसे ही मिलते रहेंगे, हम सबको मिलाते रहेंगे, ऐसी शुभ भावना सहित पूरा करते. So Sister Ella is thinking what they are discussing in Hindi. I am not able to understand anything. Okay, so I am congratulating this family, Ritvik and Kishore Bhai and Jaswin, because today we got that fortune due to this family. So I am congratulating them. Okay. So sister, which words of Hindi you know? Let me know, please. Sister Ella. Atma, Paramatma, Param, Parasputi, Pattarpati. Okay. Do you know the Hindi meaning of water? No, I don't. I only know Gyan words. Okay. Okay. Pani. Funny, funny. परम धाम, परम धाम. Paramdham. Okay. So let's meditate for 2 minutes and then we will finish.